respected Principal Sir to please come on the stage and grace the stage. Knowledge, hope, and positivity. To begin this auspicious evening, we believe in invoking the blessings of the Almighty. Lighting a lamp is not merely a ritual. It symbolizes the removal of darkness and spread of knowledge, wisdom, and positivity. It marks the beginning of a journey towards enlightenment. I kindly request our respected Shri M.D. Swami, Principal Sir, and dignified members of the management to please come forward for the lighting of the lamp. A big round of applause! I would like to welcome Mrs. Sharda on the stage. A big round of applause. परफेक्ट है क्या बोलने का मतलब? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आना, खाली वहाँ की जरा से आपको भी लगा भारत जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद। Third moment. This theme reflects our belief in values, growth, unity, innovation, culture or social responsibility. Through today's performances, our students will express this theme in different creative forms such as dance, drama and music. So dear audience, we request you to sit back, relax and enjoy how young minds interpret big ideas through their talents. Anybody addressing? Yeah. Maniba from class 9, and it is truly an honor for me to be your host for this wonderful morning. I feel proud and excited to stand before you all and be a part of this grand annual day celebration. Today we honor the vision and dedication of our school's founder, whose dream transformed into the nurturing institution we are proud today. With courage and foresight, Mr. M. Shankar Sir laid the foundation of the school, believing in the power of education to shape lives.
Every lesson we learn, every achievement we celebrate carries the spirit and values installed by Shankar Sir. A school is guided by vision, shaped by leadership, and strengthened by values. A school shines because of its student, but it grows because of its leader. Today, I am very proud to talk about our dynamic principal sir, Mr. M. Baswaraj sir. Sir, your guidance has been more than leadership. It has been a source of inspiration and strength for every student and teacher here. Your belief in us makes us believe in ourselves. We see not just a principal in you, sir, but a mentor, a guide, and a friend. Your dedication turns challenges into opportunities and dreams into reality. With patience in your words and warmth in your actions, you lead us not just towards knowledge, but towards becoming better human beings. Thank you for believing in us. Your dedication to the school and every student inspire us to work hard and aim high. I would like to share a few feelings since I have studied from LKG to 10th, from tiny footsteps to big dreams, from crying to stay at home to crying to go to school. This journey says everything. It all started in LKG with Rekha teacher who held our hands and helped us take our first step into school life. Then in UKG, Shaheen teacher helped us grow with love, care, making school life feel like a second home. To our Hindi teacher and Telugu teacher, thank you for connecting us to our languages, culture and roots. From learning alphabets to forming sentences, thank you Bindu teacher, our English teacher, for giving us confidence to express ourselves. From learning about country, history and society, thank you Vijaya teacher, our social teacher, for helping us to see the world. From understanding life, nature and ourselves through biology, thank you Zahra teacher for sparkling curiosity in us. From counting numbers on fingers to solving complex problems, thank you Shehnaz teacher and maths sir for teaching us logic. From understanding laws in physics to learning how the world works, thank you Sohail sir for teaching us clarity. A special thank you to Principal sir who corrected us and encouraged us. This school has been our second home, so on the behalf of our 10th class, I thank all the teachers. This is not just a goodbye, it's a heartfelt thank you. Vision shaped by leadership and strengthened by values. Now, I feel honored to invite our respected principal sir to address the gathering and share insights about the school's journey, achievements and future goals. Give a big round of applause. Our respected chief guest श्री माजिद हुसैन साहब 10:30-11 तक आते बोले हैं, इसलिए हम लोग टाइम को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम को शुरू कर दिए. जब भी वो आएंगे हम उनके लिए अरेंज करेंगे. सो रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, डियर पेरेंट्स, एज एन एजुकेटर फॉर 18 years I have seen many students pass out from our school and go on to success in their chosen fields. It makes me, our teachers, incredibly happy to set out students thriving. Your child's success is our success. That's what we believe in. Our aim is to put smile on each and every parent's face when their children grow up and stand independently and respectfully. So parents' happiness is our goal, and student success is our happiness. That is our motto. We have made a real difference in students' behavior, and it's reflected in the admissions that we get every year from other schools and new admissions. When they join us, we are thrilled to see them grow academically and as well as in discipline. We are thrilled to share that many of our students who passed out from our institution and they have cracked IIT, NEET, a kind of tough examinations, and pursuing their graduation, engineering, medicine from a reputed colleges. So education is not just important as others says, even the school education is also very important because it is the first stepping stone of every child and it is the foundation for every child. When the foundation is strong, automatically the students will become successful in their career and as well as in their life.
So to all the parents, we urge you, choose a school that gives your child the best start in the school level itself. So every child is the future, and it is also, as a teacher, my responsibility, as a parent, your responsibility to nurture each and every child. So let us work together, as a parent, you, and as a principal, I, and as all our teachers, to fulfill all the students' dreams when they grow up, to bring all the students' dreams into reality. A big thank you to each and every one of you trusting with us for all these many years. Your child's future is in our hand, and we will assure you the best education in the coming years as well. And a huge respect to all our amazing staff, especially our dedicated teachers who have been with us for the years. You are the backbone of the school. Thank you from the bottom of my heart for being here and encouraging our children. So all our children worked very hard to make this program successful, and I request all the parents to be here till the program ends and encourage our children and support our children. Especially when it comes to attain a very good education for every child must be in a discipline. Discipline plays very important role for every children. Discipline is equal to everyone, especially when it comes to parents, when it comes to students, when it comes to even a small staff in the school also. So in order to attain a successful in life, every student must be in discipline, and every teacher and parent also must be in discipline. Discipline doesn't mean only just sending a student to the school. Discipline means sending students, as a parent, it is the parent discipline, its responsibility to sending students regularly to school, sending students on time to school, making him do the schoolwork at home regularly, checking his marks, his subjects growth, discussing with the teacher. All this comes under discipline for the parents. When it comes to student discipline, a student must be respectful with all the students in the classroom. A student must respect their elders. A student must respect their teachers. A student must complete his own work at home without depending upon others. So this discipline we must inculcate in each and every child. So that is what we will focus on each and every child who comes to our school. So discipline play a very important role, parents. So basically we start our academic growth with the discipline. First, every student who comes to our school, we focus on the discipline, then automatically he comes into the academic growth will change. 18 सालों से एक टीचर के तौर पर मैं यही स्कूल में हूँ। 2007 में हम स्कूल शुरू करे थे, बहुत ही छोटा स्कूल था, प्री प्राइमरी से स्टार्ट करे थे। अभी हमारे पास अच्छे खासा स्ट्रेंथ है और हमारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, स्पेशली 10th क्लास की अगर हम बात करेंगे तो कंसिक्वेंटली हर साल हम अच्छे रिजल्ट से पास आउट होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये सारा हमारे टीचर्स का क्रेडिट जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी पेरेंट्स हैं उनका भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी क्रेडिट जाता है। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ आप पूरा प्रोग्राम होने तक बैठिए, सारे बच्चों को इंकरेजमेंट सपोर्ट मिलेगा, वो लोग खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Inspiring and motivating words. Your guidance continues to light the path for both students and teachers. A huge round of applause once again. Two devotional performances, a classical Bharatnatyam by M. Shreya of class 1 and M. Srushti of class 3, and Naat by Huran Farooqi of class 1, Farid Ulisa of class 4, Mariam of class 5, Nida of class 6, Razia, Asfia, Aisha, Namira, Rubina, Zubia, and Ruhi and Sadaf of class 9. A big round of applause.
మూషిక వాహన మోదక హస్త చామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర దీన వినాయక పాద నమస్తే మూషిక వాహన మోదక హస్త చామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర దీన వినాయక పాద నమస్తే దీన వినాయక పాద నమస్తే సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధి భవతు మే సదా సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధి భవతు మే సదా సిద్ధి భవతు మే సదా నమస్తే మహామాయే శ్రీపీఠే పురపూజితే సంకటే సదారతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే నమస్తే మహామాయే శ్రీపీఠే పురపూజితే సంకటే సదారతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ఆంగీకం భువనం యస్య వాసికం సర్వవామయం ఆకారం చంద్రతారాధిపం ఆధారం చంద్రతారాధిపం నమగంగాత్మీకం శివం శివం పలుకే బంగారమాయినా కోదండ పాడి పలుకే బంగారమాయినా కోదండ పాడి పలుకే బంగారమాయినా పలుకే బంగారమాయి పిలచీన పలుకావివి పలుకే బంగారమాయి పిలచీన పలుకావివి కలలోని నామస్మరణ మరువచతని తండ్రి పలుకే బంగారమాయినా
हाँ हाँ Please welcome Huran Farooqi of class 1, Farid Unisa of class 4, Mariam of class 5, Nida of class 6, Razia, Asfiya, Aisha, Namira, Rubina, Zubia, Ruhi and Sadaf of class 9 with a huge round of applause.
performances were absolutely beautiful and graceful. A huge round of applause once again. Give the medals, Bushra. Thank you, students. You may go now. Like gentle breeze and flying smiles, our pre-primary ones are ready to spread happiness on stage. नन्हे कदम हवा की तरह लहराते मूव्स और प्यारी मुस्कान के साथ आ रहे हैं हमारे छोटे कलाकार. Please welcome our pre-primary students Alishba, Aiza, Yashashvi, Kaja Yunus, Arman, Varshita, Sabia and Shoaib of class nursery, Afia, Alishba, Arshifa Anam, Abdul Malik, Aliza, Raspita, Humaira, Kizra, Lokesh, Shreya, Vihan, Sameer, Asad, Emin, Izin, Zainul Abidin, Srinika, Rafaka, Shahid, Tajamul, Imran, Rishidhar, Zara, Zidan, Shanvika and Shailaja of class LKG. Give them a big round of applause. Fresh breeze. देख रही है बस उन्होंने कहीं और देख रहे बस
Please put your hands together for our adorable kids as they perform on Mera Wala dance by the pre-primary students Shanvi, Ashlesha, Abdul Khuddus, Janvi, Mohammad Saad, Chandrika, Yoganand, Nazneen, Afia, Iman, Humaira of class UKG. Give them a big round of applause. मेरे इशारे पे सब दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस। ये है मेरा वाला डांस। तो नाचो। ये है मेरा वाला डांस। तो नाचो। वाला डांस। एक तेरे खातिर ही ये possessive है। मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा massive है। एक तेरे खातिर ही ये possessive है। मैं तेरे पीछे पड़ा, असर तेरा massive है। मैंने लाखों को लाख करके ही तुझको दिया है दिखा दे मुझे तेरा वाला डांस। देखो जो मैं कैसा है ये तेरा वाला They truly stole our hearts with their cute moves and bright smiles. Again, a round of applause. The young performers bring vibrant Punjabi spirit to the stage. Please welcome the students Hamad, Aisha, Huren, Vedamsh, Vartika, Mariam, Saad, Shreya, Sheikh Mohammed, Sri Gripane, Shabir, Bushra, Harsh of class 1, Adya, Aisha, Hiba, Muzammil, Saqib, Shafia, Hania, Afia Aliza of class 2. Give them a huge round of applause.
तारे गिनदी हसदे लटा जगल इन पावा अखियों विचों नीलियां बरसते सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है करनी जश्न की शुरुआत है मस्ती भरी रात है सोनी कुड़ियों का भी साथ है अच्छी है गाने मजा करने की क्या बात है Truly lit up the stage. स्टेज पर इतनी एनर्जी है, लगता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल घूम रहा होगा. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए.
Thank you, dear students. You may go now. Let's begin with performance 6. Parents are the first teachers and strongest support in a child's life. In their old age, parents need our patience more than our money and our time more than comfort. Treating parents with dignity, listening to them and standing by them in their difficult times is not just a responsibility. It is a reflection of our values. Our true character is revealed in the way we treat them when they need us the most. Now, M. Shreya of class 1, Sadaf, Razia and Asfia of class 9 will perform the skit on importance of parents. Give them a huge round of applause. जिनकी उम्र को करता वाला चलना सीखा, आज मैं उन्हीं उम्र दिखाता हूँ। जाने अनजाने में क्या बनाकर जाता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरा लाडला, माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बतलाता नहीं, मैं धीरे से डरता हूँ। यूं तो दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। तुझे सब है पता, तुझे सब है पता। हो गए इतिहास का ताज तू।
हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। मां वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। मां वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। मां वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। मां सब कुछ है, बस हमारे पास ही नहीं है। लेकिन हमारे पास पापा है और वो भी काफी अच्छे हैं।
जाने हैं, मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम घर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। दुनिया है आप, मुझे सब कुछ तब अच्छा लगता है जब आप दोनों पास होते हो। पापा स्ट्रांग हो और मम्मा सबसे प्यारी है। मम्मा डैडी आई लव यू सो मच, थैंक यू। माँ बाप अपने ख्वाब खामोशी से कुर्बान कर देते हैं ताकि उनके बच्चों के सपने जिंदा रह सके। धूप में कुछ जलते रहे और हमें हमेशा छांव देते रहे। थक कर भी जो कभी शिकायत नहीं करते वो हमारे माँ बाप होते हैं। हमारी खुशी के लिए जो खुद हार गए वही तो हमारे माँ बाप होते हैं। उनके हाथ मेहनत से सख्त हो गए हैं और हम अपनी छोटी सी तकलीफ पर रो पड़ते हैं। उनका संघर्ष लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, वो तो सांस के साथ निभाया गया फर्ज होता है। थैंक यू। आज के बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं, जिन हाथों ने चलना सिखाया उनसे ही दूर हो जाते हैं। माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जिंदगी का सहारा होते हैं। फिर भी उनकी कदर हम अक्सर देर से समझ पाते हैं। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हार्टफेल्ट परफॉर्मेंस। सेल्फलेस, एंडलेस एंड अनकंडीशनल लव। माँ एक ऐसा एहसास है जो बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। लेट अस वेलकम आवर स्टूडेंट्स राघव, शिजा, आयजा, विघ्नेश ऑफ क्लास 1, बुशरा, देवांश, जीविका, कृष्णा, अरमान, मुक्तदिर, दर्शन, रजाला, ऋषिका, मायरा, अब्दुल्ला, नक्शित, सैफुद्दीन, जहीर ऑफ क्लास 2। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। भोली है, प्यारी प्यारी है।
That was adorable and emotional. Class 1 and 2 students, ये छोटे superstars are all set to rock the stage on Golmaal. So please welcome Maimuna, Aira, Rishita, Bilal, Zainab, Taimur, Vedamsh, Hitakshi of class 1, Zohan, Arifin, Abdul Rahman, Abu Bakr Siddi, Vicky, Zafir, Furqan, Rahul, Umar, Mutalib of class 2 with a huge round of applause. नमस्ते सलामा आ गए दिल से करने हंगामा बोली गुलाबी जश्न में शराबी बेबस याद आना अपने संग गिरा जाना छोड़ दुनिया से शर्माना जोरों जोरों से तू चिल्लाना
सच में स्टेज पर गोलमाल मचा दिया। जोरदार तालियां हो जाए। बेटे हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ से आना जाना नहीं बोल के, चलो उधर से जाओ, ऊपर जाना भी तो। दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो कभी सुना है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस सुपरस्टार की बात कर रही हूँ। प्रेजेंटिंग अ शाहरुख खान मैशअप बाय अब्दुल रहमान, खदीजा, अयाज, इमरान, इब्राहिम, रिदान अकरम, आफरीन, सफूरा, अबू बकर ऑफ क्लास 3, जोहरा, माहिरा, अभिषेक, अफजल, निकिता, उस्मान, आतिफ, अफजल मास, प्रकुल, आदित्य, अमृता ऑफ क्लास 4. Give them a huge round of applause. सबके दिलों में शामिल भी हो, तुमको चुराना मुझे उड़ाना, बस यही मेरा कुछ ख्वाब से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। कैसे होता है shows me as a tricky movie performances pretty मुझको क्या हुआ है जो मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ लिखा लिया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
बड़ी दीवानी धीरे धीरे है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे पंचायत न कोई कहानी दिलदार नजारे आज अभी पर कितने सितारे हैं दीवानगी 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 है इल्जाम नहीं दीवानगी 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 है Energy, expressions and graceful movements define Shah Rukh Khan's mashup. Give them a huge round of applause. That we all need to think about. Through this skit, our students will show how mobile phones, when used without limits, can slowly control our time, focus and relations. This meaningful skit is presented by our girls, Sara Anika of class 9, Tahura Humaira Sara of class 8, Asfiya of class 9, highlighting an issue we all relate to today. Give them a huge round of applause. To the बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को न देखो, किसी को न सुनो, किसी से कुछ न बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर वास कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन रहा है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कब हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो।
वाला मशीन, तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? Along with humor, plus communication and family bonding. Thank you for your attention. मोबाइल हाथ में हो तो लगता है सब कंट्रोल में है। स्क्रॉलिंग करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। रियल लाइफ से ज़्यादा स्क्रीन लाइफ इम्पोर्टेंट हो गई है। बैटरी लो हो तो एंजाइटी हाई हो जाती है। नोटिफिकेशन की आवाज़ ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। थैंक यू। आज जो 90s के गानों के साथ ला रहे हैं, फुल मस्ती और नॉइस, थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी कॉमेडी और काफी सारी स्माइल्स गारंटीड। सो नाउ लेट्स वेलकम आवर बॉयज प्रेमानंदा, कुणाल, पादू, प्रणय, अब्दुल्ला, रेहान, हेमंत, रयान, कबीर, जुबेर अयान, संजय ऑफ क्लास 6, विवेकानंदा, आरुष, मोहम्मद फरहान, रयान ऑफ क्लास 7, इब्राहिम, अदनान, मोहम्मद मोहिउद्दीन, अंकित, संजय, मनोज, अजान, ओवेस ऑफ क्लास 8, विनय एंड कामराज of class 9. Give them a huge round of applause. मैं
कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। Yet another exciting performance of the evening. Let's welcome our performers of class 3 and 4 for Amir Khan mashup. Give them a big round of applause. చికి చకచో గిలి గిలి మల్ సులు సులు మల్ మకనక హుకు బుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిరి 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 గో బగదుం జగదుం చికి చకచో या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं अपने कहीं हम जैसे देखेंगे जहाँ है वैसा ही जैसी नजर अपनी सोचे आओ चलो 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 नए ख्वाब बुने मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल
को करके गोल सीधा जाके बोल Life so out of control तो को करके गोल तो को करके गोल सीधा जाके बोल मुर्गी जागा रे अंडे का होगा लाइफ मिलेगी या तबे तो सारी होगा मजा में अपना फ्यूचर क्या होगा सीढ़ी बजा के कौन भैया And from dreams to determination, today's performance was beautiful. Call both of them. A huge round of applause. Hafsa teacher and Tabassum teacher, please come on the stage. How your performance की ना करो Not just performances, they are tales of courage, sacrifice and duty towards the nation. Some lose the sleeve and emptiness that words can't fill. We pay our humble tribute to the souls lost in Pahalgam attack and extend our heartfelt sympathies to the grieving families. The soldiers who fought during the Sindoor attack showed us the true meaning of bravery and service. The next skit, Operation Sindoor, brings to life such a powerful story. Let's welcome the students. Give them a huge round of applause. सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की दहशत वैली मेमोरियल स्कूल में आतंकियों ने 26 लोगों से लोगों को मारा, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। गल्ला तेरिया तो लगदा
तहमीज नहीं होती, नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अपनों को लेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। अब किसकी नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया। भारत पाकिस्तान दोनों से बड़ी खबर सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला। एक चिंगारी सिर से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है रहूं में एक चिंगारी सिर से जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मान में हमेशा रहेगा। जय हिंद। इस किट ने हमें याद दिलाया है कि देश की सुरक्षा के पीछे कितनी हिम्मत और त्याग छुपा होता है। दिल से सलाम। Will now take us back to the golden era of Bollywood through this retro dance. Give them a big round of applause. संगम होता तो नहीं हर जन्म में हर बदल के आबों के पर्दों पे मिल गए हम है राही प्यार के दिल मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के दिल मिलेंगे चलते चलते
देखा भवर कर यार किसी से होता जिया कुछ भूल अब कभी दिल में होता तेरे घर के सामने घर बनाओ उठा ही सही पत्थर के लिए कोई हम प्यार करे झुका ही सही झुका ही सही झुका ही सही हर जन्म में रंग बदल के आबों के पर्वतों पे खिल अब है राही प्यार के मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के मिलेंगे जय जय शिव शंकर का लगे न कंकर चाहे कुछ हो जमाना मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी जिंदगी सफर है सुहाना ना सुना कीजिए जन्म में रंग बदल के आबों के पर्वतों पे हम है राही प्यार के and young energy. I request all the audience to remain seated in your respective places. Thank you. Primary teacher Miss Shashi Rekha, teacher to receive the certificate. A big round of applause. Primary teacher is Kavita to receive the certificate. A big round of applause. Lost inside the night, your shadow makes me blind. Our primary teacher Miss M. Padmini teacher to receive the certificate. A huge round of applause. I'm falling for you. A big round of applause. Audience, give them a big round of applause. I would like to call our primary teacher Mrs. Tabassum Begum to receive the certificate. A big round of applause. In the dark.
Next. I would like to call Mir Abrar Ali of a huge round of applause. Shafia of class 2 to receive the prize for outstanding academic performance. I would like to call Abdul Rahman of class 2 to receive the prize for student of the year. To receive the prize for perfect attendance. Give a huge round of applause. I would like to call P. Prakul of class 4 to receive the prize for outstanding academic performance. I would like to call Mohammad Abdul Mas of class 4 to receive the prize for perfect attendance. I would like to call B. Anjali of class 5 to receive the prize. B. Anjali. I would like to call Zainab Begum of Biradar of class 5 to receive the prize for perfect attendance. Give them a huge round of applause. To receive the prize for perfect attendance. I would like to call Nabiha Fatima of class 6 to receive the prize for outstanding academic performance. For Student of the Year. I would like to call Syed Abrar Ali of class 7 to receive the prize for perfect attendance. Audience, give them a huge round of applause. I would like to call G. Bhavani of class 7 to receive the prize for outstanding academic performance. Nanda Reddy of class 7 to receive the prize for Student of the Year. Give them a huge round of applause. Vivekananda to receive the prize for Student of the Year. Give them a big round of applause. Sayyida Humaira Fatima of class 8. Of class 8 to receive the prize for outstanding academic performance. Sayyida Zahura Begum of class 8 to receive the prize for perfect attendance. Mavia Siddiqui of class 8 to receive the prize for perfect attendance. A huge round of applause. I would like to call Namira Fatima of class 9 to receive the prize for outstanding academic performance. Receive the prize for Student of the Year. A huge round of applause. I would like to call Syed Ismail Ali of class 10 to receive the prize for perfect attendance. A huge round of applause. To receive the prize of Student of the Year, please give them a big round of applause. So, of class 10 to receive the award of Outstanding Academic Performance, please give them a big round of applause. I would like to call Aiza Abdul Karim of class nursery to receive the prize for Student of the Year. Aiza Abdul Karim of class nursery the prize for perfect attendance. Varshita of class nursery. Arshifa Adam of class LKG to receive the prize for outstanding academic performance. Next. LKG to receive the prize for perfect attendance. I would like to call Syed Shahid Hussain of class LKG to receive the prize for Student of the Year. I would like to call Asli
Anisha of class UKG to receive the prize for Student of the Year.